ये है पोको का M2 मोबाइल। इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा फूलने के कारण से आगे का डिस्प्ले बाहर निकल गया और इसमें लाइनिंग प्रॉब्लम आ रहा है। और इसमें फ्लेक्स केबल भी बहुत प्रेस होने के कारण से ये केबल में भी डिस्टर्ब हो रहा है। अभी स्पीकर माइक कुछ काम नहीं कर रहा है, तो एक एक करके हम इसको चेक करेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। बैटरी ज़्यादा फूलने के कारण से फ्लेक्स केबल को बहुत खींच के रखा था, तो अभी मैंने जैसे नॉट को रिलीज़ किया तो फटक से ऑटोमेटिक केबल बाहर निकल गया। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिस्प्ले को पुराना डिस्प्ले को निकाल के नया डिस्प्ले इसमें सेट करेंगे। इसके बाद इसका फ्लेक्स केबल का जो कनेक्टर खराब हुआ है उसका रिप्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले सेट करके वापस से चिपक दिया। ये कुछ टाइम बाद हम इसको चिपकने देंगे। उसके बाद कुछ टाइम